The students, am I audible? Yes, sir. Screen is visible to you? Yes, sir. Right. Okay, good afternoon. Hope I am audible to everyone. Okay. Yes, sir. And screen is visible. Okay. So we will continue with our last discussion. Okay. Last time हमने new topic start किया था. That is kinematics of rigid body. Okay. And here we are going to see the analysis of general plane motions. Okay. Now, in the last lecture already I had taught you the basics, some of the basics things. Okay. In general plane motions, as we seen, neither it is a pure rotation nor it is a pure translations. So in such cases, what we do, since this is a combined motion of rotations, or you can say it is a combined case of rotations as well as translations. Okay. So for this, we can assume this to be a pure rotations. Okay. But for that, we need some what point about which the motions can be assumed to be a pure rotations. Okay. And that imaginary point, we call it as a ICR. Right now, this is what we call it as a ICR. Correct? इसका full form क्या होता है? Instantaneous center of rotation. Instantaneous center of rotations. इसके बारे में कुछ चीजें मैं बता दूं आपको. See, as the this actually this is nothing but an imaginary point. What? It is nothing but imaginary point. Why it is called as an imaginary point? See, for example, okay, हमने ये सिंपल सा एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम. अगर ये है, ठीक है, ये रॉड है which is resting against this wall, let's say. Okay, are you getting me? Now if, let's say, if I want to analyze the motion of this rod, okay, so this motion I can see this will neither be a pure rotation nor it will be a pure translation. It will be performing a plane motions. So this motions can be split into translation plus rotations. Okay. Now instead of considering this as what individual translation and rotation, I can consider this combined effect as a pure rotations. What? Pure rotations. So for that, I want some point about which I can consider the rotation of this rod. Okay. So that point will be what? Imaginary point. Okay. It will actually it will not be fixed. Okay, at one point it will vary instant to instant. What? Since the position of the body keeps on changing, or it will be goes on changing, so therefore instantaneous center also goes on changing. So you can say ICR what goes on changing. That's why it is named as instantaneous center of rotations. It will keep on changing. Are you getting me? Let's say another example I had told you, the wheels of the vehicle. Okay, so ये क्या करता है? ये रोटेट भी करता है और साइमल्टेनियसली क्या होता है? ट्रांसलेट भी करता है. Are you getting me? So this motion can be considered as a pure rotation. Pure rotation about a
point which is nothing but I. We are going to see how it is possible. Okay. After that, one more thing you need to keep in mind regarding this ICR. ICR is always a point where there is a zero velocity. We'll see that how. Okay. ICR is a point of zero velocity, and ICR, see, this whole analysis is based on ICR. So first we need to understand how to get this ICR, means how to locate this ICR. तो in that, उसमें हमने ICR के केस में हमने पहला केस देखा था, क्या देखा था हमने पहला केस, जब पहला केस क्या था, when the direction, लास्ट में से रिपीट कर रहे हो या फटाफट में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ बिकॉज उसके करो बाद सर रिवाइज the direction of velocities of two particles, okay, two particles A and B are known, okay, and VA is not parallel to VB. यही था ना लास्ट केस फर्स्ट वाला. तो इसमें हमने क्या देखा था, हमने एक रैंडमली एक बॉडी कंसीडर किया, ठीक है, लेट्स से दिस, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा A, this point as B, let's say, okay, there will be several particles of which this body will be made up, this rigid body, okay. Let's say we know the direction of this velocity, let's say it is like this, okay, and let's say ये भी है कुछ, तो ऐसे randomly पकड़ देता हूँ मैं इसको, ठीक है, randomly ऐसे कुछ भी दे देता हूँ VB, because यहाँ पे क्या बोला है, direction of velocities of two particles A and B, so these are the two particles A and B, okay. Here I know the velocity of point A, VA, and velocity of point B, that is VB, and these are not parallel to each other. So how I can locate? Yes, very easy, I can mark ICR. तो ICR के लिए क्या करना है आपको, एक बात ध्यान में रखना है. Yes, you will draw a line which will be parallel, which will be perpendicular to this line of action of this velocity, because that ICR का जो line of action होगा, it will always be perpendicular to this. As you know this, see, if this is a ring, okay, and it is rotating about point O, okay. Hello, are you getting me? Yes sir. So if this rod is, let's say this rod is here, what, fixed about this hinge point O, let's say, and this is omega. If it is rotating with angular velocity omega, and let's say this is the what, point A, and this is point O. Okay, so this is rotating about O point, okay, with the radius of rotations as R. Okay, so I know that V is given by what, R into omega, right? No? Hello, and what would be the direction of VV is exactly perpendicular to this, correct? How I decided the direction of this VA, since this omega is moving what, clockwise, right? Clockwise. So this will try to rotate this point A about this point A को point about O के about कैसे rotate करना करेगा, वो नीचे की तरफ rotate करेगा. So that's why this is downward arrow. Let's say अगर मैंने इसके बजाय ऐसा ड्रॉ किया होता था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, so this would have been like this, right? Right? This will rotate about this point O in the anti-clockwise directions, but this is also perpendicular to this link. So the direction of velocities you have to keep in mind from the what, rotating point will be perpendicular. तो मीन्स ये जो perpendicular line है, इस पे ही वो point lie करेगा. तो यहाँ पे ये जो point है, ये एक existing point है, एक fixed point है. ये क्योंकि ये क्या है, ये pure rotation. प्योर रोटेशन के केस में क्या होगा, ये पॉइंट हमेशा चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट एक जगह पे फिक्स होगा, बराबर ना. लेट्स से अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये पॉइंट इधर ही रहेगा. तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे भी मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये पॉइंट इधर ही रहेगा. इट विल नॉट चेंज, दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर रोटेशन, सिंस द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज व्हाट, फिक्स्ड. बट इन दिस केस, okay, but in this case my
point will vary, okay, instant to instant. That's why it is an instantaneous center of rotation and it is imaginary. वो क्यों चेंज होता है? क्योंकि बॉडी का पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग. तो हमको क्या करना पड़ता है? बॉडी का पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग. फॉर दैट वी नीड टू have a point such that it will orient itself so that it can be assumed, its motion can be assumed as a pure rotation about that point, and with respect to that point we can easily determine the velocity just by using I, correct? Or you can say the distance of that point from that instantaneous rotation point. Okay, तो यहाँ पे भी क्या चीज करना है नोट आपको, ये अगर VA का डायरेक्शन है तो I का जो I जो है I इस लाइन पे कहीं तो I होगा. Am I correct or not? Are you getting this much? So this will be my perpendicular line. Okay. Similarly, this, if I know the direction of this point B, velocity का direction point B का पता है, so I can again drop a perpendicular on this. Okay, drop a perpendicular on this. See, like this. Okay, now this two will intersect, this two perpendicular will intersect here, and this will represent your I. Okay, so this point of intersection of these two lines will represent what? The point of what rotation, that is I. This is your ICR. Now I can say this body is what? Rotating about this I. But this I point will be what? Not fixed point. It will change its position instant to instant. मतलब अगर मैंने t is equal to 2 seconds पे ये बॉडी का पोजीशन ड्रॉ किया है तो ये ऐसे रहेगा. At t is equal to 3 seconds पे मैंने अगर देखा तो ये I का पोजीशन कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है. ICR may lie within the body, okay, or may lie outside the body. It will depend on the orientation of it. Getting me? So here I can easily find out, once I found the I point, I can easily determine V, correct? V of point A. That is what? R into omega. R is what? Distance of the point from the ICR. That is what? This distance. That is IA. So IA into, I can say it is omega with which it is rotating. Okay. So I is what? I is a point where all the particles will rotate with the same angular velocity. Similarly, I can have VB. Okay, VB के लिए क्या करूँगा? This IB into omega, correct? So IB into omega. Are you getting me? तो यहाँ पे confusion क्या आया? To locate ICR. I hope you are getting me. To locate ICR, okay. To locate ICR, what? Direction of velocities of any 2 points, in the rigid body, are what? Sufficient. Are you getting me? Hello. ये किसको नहीं क्लियर हुआ ये बताओ. This is very important point. So if you want to locate the ICR, direction of the velocities of any 2 points in the rigid body are sufficient. And why we need to locate the ICR? Because without locating ICR, you cannot analyze the general plane motions. Okay. And why we are doing this? Because general plane motions we are assuming as a pure rotation. So if it is assumed to be a pure rotation, so we need to have some imaginary center of rotation, and that is what this ICR, that is instantaneous center of rotations, which keeps on changing instant to instant. यहाँ तक clear है सबको? Hello. Yes, sir. Yeah. So now let us take case 2 and you tell me where the ICR will lie. Okay. Case 2 is such that यहाँ पे मैं लिखता हूँ when the direction, let's say when the direction and magnitude, of velocities of two particles A and B are known.
are known. Okay, and let's say VA is parallel to, now it is parallel to VB. let's say अभी मैं क्या assume कर रहा हूँ, दोनों का डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है, और दोनों पैरेलल भी है। तो कैसा हो जाएगा केस? लेट्स से दिस इज माय रिजिड बॉडी, ओके, and let's say here one particle, let's say here there is one particle, here there is one particle, okay, ये A है, ये पॉइंट B है, समझ में आ रहा है आपको? लेट्स से इसका जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऐसा है, दिस इज माय VA, लेट्स से, ओके, एंड लेट्स से दिस इज माय VB, लेट्स से VB जो है थोड़ा सा छोटा है उससे, ठीक है, आर यू गेटिंग मी? नाउ कैन यू टेल मी where the ICR will come? Hello? Yes, who will tell me? Perpendicular to VA, VB. Yes. See, मैंने क्या बोला था? AB एक्सिस का लॉन्ग है। Yes, always draw Along. what you need to follow? बोलो कैसे और आएगा? सर कैसे आएगा? कहाँ पे आएगा इससे? Sir, along the AB line, मतलब perpendicular. इस See, पॉइंट में Parallel. in this case, what you will do? You will draw a perpendicular line to this, correct? तो यहाँ पे कहीं पे ICR lie होगा, इतना पता चल गया, ठीक है? This will be your I, correct ना? But since they सर are यहाँ पे parallel, so what you will do? You will draw a line which will pass through the extremities of these two vectors, velocity vectors, and where they will intersect, that point will be here, and that is what I. So this is your I in this case. Are you getting me? अगेन देखो, अगेन मैंने यही रूल फॉलो किया। क्या? मुझे दोनों का डायरेक्शन पता था, ठीक है, सिर्फ मुझे डायरेक्शन ही सफिशिएंट है आईसीआर लोकेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी दिया था, तो मैग्नीट्यूड भी दिया था तो अच्छी बात है, एटलीस्ट दिस इज व्हाट सफिशिएंट। बट यहाँ पे ये भी दिया था, तो ये मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया, तो इसका एक्सट्रीमिटी से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन मिला, दैट इज आई। नाउ इन दिस केस वन थिंग यू कैन नोट, ये आईसीआर जो मिला है ये बॉडी के बाहर लाया हुआ है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आईसीआर मे lie आउटसाइड द बॉडी और मे lie विद इन द बॉडी। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखो। नाउ अगेन यू कैन फाइंड वीए, अगेन ओमेगा पता होगा, ओमेगा इनटू आई करके, फिर वीबी ओमेगा इनटू आईबी करके आप निकाल सकते, करेक्ट? वी इज इक्वल टू आर वन। एम आई क्लियर टू यू? सर अच्छा, इसी आईसीआर पॉइंट को, सर सॉरी, आईसीआर पॉइंट को हम लोग, सर जो हाँ, आईसीआर पॉइंट मिला है उसको हम लोग फाइंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से फाइंड करके ना। वो सब मैं बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल, अभी सिर्फ लोकेट करना बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट केसेस वी सी दैट इन न्यूमेरिकल, कैसे निकालेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, सब देखने वाले हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल यूज करके सब हम करने वाले हैं आगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसी में मैं एक स्पेशल केस बताता हूँ, ठीक है, लेट्स से अभी ये ऐसा होता है, अभी देखो ये दोनों VA एक ही डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है ये VA एक ऐसा हो और ये VB ऐसा हो, राइट ना, फिर भी ये भी तो पैरेलल है ना, तो पैरेलल में दो केसेस पॉसिबल है, राइट ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो लेट्स से अभी वो वाला देखते हैं, समझो ये VA है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है समझो, ठीक है, और अभी V का डायरेक्शन जो है पैरेलल है, बट VB जो है अपोजिट डायरेक्शन। अभी कैसे करोगे बोलो? यस, तो अभी डायगोनली और वो AB एक्सिस का लॉन्ग का इंटरसेक्शन पॉइंट। सर एक्सट्रीमिटी को ज्वाइन करना है सर। यस, पहले परपेंडिकुलर याद रखो, पहले परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, दोनों का सेम आएगा, दिस विल बी दैट, ओके, एंड देन सिंस वी नो द मैग्नीट्यूड जॉइन द एक्सट्रीमिटीज, ओके, तो ये यहाँ पे ऐसे आपका कहीं पे आएगा, ठीक है, तो दिस विल बी हियर ICR, ठीक है, आई होप यू गॉट मी।
दिस इज व्हाट आई, करेक्ट ना? ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. या तो दिस इज व्हाट केस 2. नाउ लेट्स टेक केस 3. वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर. लेट्स डिस्कस दिस केस 3. समझो रोजिंग है अभी, रोजिंग विदाउट स्लीपिंग, जैसा कि अपना व्हीकल्स में व्हील्स में होता है, ऑन अ फिक्स्ड सरफेस, on a fixed surface, closing without slipping on a fixed surface. मतलब ये आपका जो है व्हील्स है. एक मिनट, मैं थोड़ा ये गोल अच्छा बनाता हूँ तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा. ठीक है, ऐसा. ओके, अभी आपको इमेजिन हो जाएगा ना? ठीक है, दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग and let's say it is moving like this, okay, in this directions. Now can you tell me where the ICR will come? बोलो. अभी पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जो जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म करेगा उसके लिए ही आईसीआर अप्लाई हो सकता है. अगर सर ये प्योर जनरल ट्रांस प्लेन मोशन ही है। हाँ, जनरल प्लेन मोशन ही है. क्यों? क्योंकि ये अगर ये रोल हो रहा है, रोलिंग हाँ मतलब सी, रोलिंग मतलब क्या होता है? रोलिंग मतलब ये होता है कि इट इज नीदर प्योर रोटेशन नीदर प्योर ट्रांसलेशन, इंस्टेड इट इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन को रोलिंग बोलते हैं, क्योंकि व्हीकल्स का जब मूवमेंट होता है तो व्हील्स जो है रोटेट भी होता है और ट्रांसलेट भी होता है, तभी गाड़ी आगे चलती है. तो यहाँ पे ये होता है प्लेन मोशन का डेफिनेशन. तो इसका मतलब ये व्हील्स जो है यहाँ पे प्लेन मोशन कर रहा है. ठीक है, प्लेन मोशन कर रहा है तो इसका आईसीआर लोकेट होना चाहिए. तो वो आईसीआर कहाँ पे आएगा? सर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा। क्यों आएगा? अभी रीजन भी पता होना चाहिए क्यों आएगा. सर वो फिक्स रहता है मतलब पॉइंट उधर मतलब। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, उसका जस्टिफिकेशन चाहिए ना, क्या आएगा वहाँ पे. सर उसका वेलोसिटी 0 है। Yes, correct. See here, we know that V is equal to R omega, correct? And since it is what? It is rolling without slipping on a fixed surface. A fixed surface है मतलब इसका velocity 0 है, बराबर ना? Right or not? Hello, ये velocity 0 है, मतलब either this R should be 0, either this omega should be 0. Then only velocity 0 is possible, correct ना? Hello, यस सर। but ये omega 0 हो सकता है क्या? Tell me. Omega नहीं 0 हो सकता है क्या? Omega can't be 0 because it is what? Performing rotation ना as well. तो इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, विच कांस्टेंट ओमेगा इट इज मूविंग, तो ओमेगा 0 नहीं हो सकता. दैट मींस r will be 0 here. तो r0 means what? r0 implies what? r0 implies means ये जो पॉइंट है, पॉइंट itself is what? I. Correct? Since there is no r in this case, that's why this point of contact of this wheel with the ground surface is itself I. समझो ये I इधर कहीं पे होता था, I यहाँ पे कहीं पे होता था, तो ये जो डिस्टेंस आता था दैट विल बी I इनटू दैट पॉइंट का डिस्टेंस. बट यहाँ पे ये पॉइंट ही कांटेक्ट जो है आईसीआर हो गया. तो ये सबसे इजी वाला केस है. अगर रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन अ फिक्स सरफेस आया तो आपको सिर्फ आईसीआर लोकेट भी नहीं करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हो गया ये आई हो गया. और समझो आपको सेंटर का वेलोसिटी पूछा, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर पॉइंट वीसी, तो जस्ट आप ये क्या करोगे, इसको इससे ज्वाइन करोगे और वीसी इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू ओमेगा करोगे, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे आईसीआर हुआ. ओके ओके, सो विद दिस मच इंफॉर्मेशंस आई थिंक वी कैन नाउ स्टार्ट द न्यूमेरिकल. ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही है इस चैप्टर में. देखो, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में
सिर्फ इतना ही है। आपको मैं एक जनरल स्टेप बता देता हूँ। कोई भी एक मैकेनिज्म दिया होगा, कोई भी एक मैकेनिज्म दिया होगा, या यू कैन से रिजिड बॉडी रिंग कोई भी दिया होगा। फर्स्ट यू हैव टू सी दैट मैकेनिज्म, ओके, देन आइडेंटिफाई व्हाट, आइडेंटिफाई द जनरल प्लेन मोशन कहाँ पे हो रहा है, मैकेनिज्म के अंदर कौन सा लिंक है जो जीपीएम यानी जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके जी, लास्ट टाइम मैंने बताया होगा शायद, लिंक मतलब क्या होता है इन मैकेनिकल टर्म्स, इट इज अ टेक्निकल वर्ड। every element every element of the mechanism is called as a link। कोई भी मशीन देखते हो, मशीन में कोई भी एक पुर्जा होता है, पार्ट होता है, उसको लिंक बोलते हैं। ये लिंक बहुत सारे कंबाइन किए जाएंगे तो मैकेनिज्म बनता है। समझ में आ रहा है बात? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका 4 बार मैकेनिज्म है कुछ ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक लिंक फिक्स किया, अगर इसको मैंने रोटेट किया ओमेगा से, तो इसके और इसके अंदर भी कुछ तो इफेक्ट आएगा ना। यानी ये जो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 विंग्स आर देयर। ये 4 विंग्स बन के एक मैकेनिज्म बना, दिस इज व्हाट मैकेनिज्म। और ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म मिलाएंगे तो एक मशीन बनता है। आर यू गेटिंग मी? हेलो हेलो। Yes, sir. तो दिस मैकेनिज्म विल हैव सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, मतलब ये एक रिंग को हमने क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो बाकी को मोशन मिल जाता है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाता है, तो उसको हम लिंक बोलते हैं। तो ये आपको पहले ये देखना है कि मैकेनिज्म के अंदर कौन सा लिंक जीपीएम परफॉर्म कर। वंस इट इज आइडेंटिफाइड, यू नीड टू लोकेट आईसीआर। ओके, आईसीआर लोकेट किया मतलब आपका 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि आईसीआर लोकेट किया मतलब आपका मेन काम हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, ज्योमेट्री अप्लाई करना है, साइन कोसाइन रूल अप्लाई करना है, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके आपको डायमेंशंस वगैरह जो भी दिया होगा हमने फाइंड, दैट इज अ मैथमेटिकल पार्ट। ओके, ये एक जनरल स्टेप्स आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यही चलेगा इसके अंदर। सिर्फ आपको स्टडी यहाँ पे क्या करना है, आईसीआर के बारे में, आईसीआर कैसे लोकेट करना है। बहुत बार आईसीआर लोकेट करना नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है और गलत हो जाता है प्रॉब्लम, बिकॉज मैकेनिज्म जो जो दिया होगा ना, वो मैकेनिज्म्स को आपको समझ के चलना है पहले कि मोशन शो कैसे रहे हैं, कौन से पार्ट में जीपीएम हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शंस क्या है। as per that you can then mark the ICR, because मैंने बताया to locate the ICR, direction of velocities of any 2 points in the rigid body must be known. At least this sufficient condition should be there. Okay, hope you got this correct. Now we shall start the numerical. समझ में आया ना? हेलो Yes, हेलो, sir. और एक बार वो लास्ट स्क्रीन दिखाओ। एक मिनट है। हाँ, ठीक है, now suppose problem number 1, क्वेश्चन बैंक है ना आपके पास, क्वेश्चन बैंक ओपन करो और इसमें आ जाओ, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में आ जाओ, ठीक है। ओपन किया, हेलो Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम नंबर 4.2.1, let's read it. A ladder or bar AB 5 meter long resting against two surfaces, okay, here you can see this is resting against these two surfaces as shown in figure. The end A is pulled towards right, okay, end A is pulled towards right with velocity of 4 meter per seconds. Find subpart A is ICR of ladder, okay. First you need to find the ICR of this ladder, okay. Second,
angular velocity of this z, okay, that is also not given, but the velocity at point A is given, okay, you need to keep in mind, and it is towards the right, okay. So one thing you can note here, if this point A is moving towards right, point B कहाँ पे आएगा, point B का velocity का directions क्या होगा, hello, if the point A is pulled towards right, inclined plane के along. velocity 4 meter per second, correct. So what will be the direction of velocity for B? Hello. Down. Hello. Sir, along the slope. Yes, it will be Along the slope. along this what? Along this surface, but in the downward direction. Correct ना? Hello. Am I audible? Yes. Yes. तो इसका मतलब दोनों भी पॉइंट के डायरेक्शंस पता है वेलोसिटी का, ठीक है, मतलब आईसीआर लोकेट हो सकता है, ठीक है सर डाउनवर्ड क्यों? अरे बाबा ये देखो यहाँ पे सिंपल है ना, सी ये आपका ऐसा ही है ना, ऐसे ही रखा हुआ है ना, ये देखो ऐसे ही रखा हुआ है ना, ठीक है, और इसको ऐसे खींच रहा है ना वो, ठीक है, ओके 4 ओके मीटर, सर समझ। अगर ये ऐसे खींच रहा है तो ये ऐसे ही नीचे आएगा ना, हाँ हाँ है ओके। ना, तो दैट इज व्हाट आई मीन टू से। तो पहले आपको डायरेक्शन के बारे में इमेजिन कर लेना है, जब तक डायरेक्शन नहीं होगा ना, मिनिमम सफिशिएंट कंडीशन उतना चाहिए, तभी आप आईसीआर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम सफिशिएंट कंडीशन अपने को है, ठीक है, अपने पास दोनों डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब आईसीआर मिल जाएगा हम। फिर एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगा वो देखेंगे बाद, कैसे ना कैसे तो निकाल देंगे, ठीक है। थर्ड क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एंड बी, ये वाला जो एंड बी है, एंड ए का दिया है, वेलोसिटी ऑफ एंड बी निकालना है। एंड देन also we have to find the center का velocity, means center C, let's see यहाँ पे center कहीं आएगा 2.5 मीटर पे, तो वो पॉइंट का भी निकालना है at the given instant, मतलब ये जो इंस्टेंट है इसी इंस्टेंट पे निकालना है। समझ में आया ना, क्लियर है, हेलो, प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, sir. तो नाउ ड्रॉ इट। तो पहला स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म, ओके, एंड देन एक सेकेंड, and then check for the element which is performing a general plane motion। तो यहाँ पे जनरल प्लेन मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है, चलो बताओ, जनरल प्लेन मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? Sir, rod. जो rod है. यस, रॉड ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब रॉड ए बी परफॉर्म कर रहा है जनरल प्लेन मोशंस, तो वी नीड टू फाइंड इट्स आईसीआर। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, अगर इसका वेलोसिटी ऐसा है तो फिर इसका कैसा होगा, राइट। नाउ दिस इज VA, VA is given, I think this is 4 meter per second, and this is VB, correct? This is point B, this is point A, okay? Yes, what next? Yes, length of AB is given, rod का length दिया है, that is 5 meter, and point C is at 2.5 meter, that is, it is a center point, correct na? We need to find out I point, that is ICR. Then we need to find angular velocity of this rod, that is AB.
and we need to find out velocity of v and velocity of c. ठीक है? Hello. रिप्लाई करो ना. हेलो. यस सर. चलो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे फिर अभी बोलो. हाँ ये एंगल भी दिया हुआ है. सॉरी एंगल कितना है? सर हाँ बोलो. सर ओमेगा 0.7 नहीं मुझे आंसर नहीं चाहिए अभी. पहले मुझे पहला प्रॉब्लम है तो स्टेप बाय स्टेप जाने दो. आपको आया लेकिन बाकी लोग को भी आना चाहिए. 30 डिग्री. ओके 20 और 30 है ना ये. राइट ना. हेलो. So what you will do, see this velocity is known. Okay, इसका direction is known to us. So first you can drop a perpendicular here. Okay, you can drop a perpendicular to this. So this will be like this. ठीक है ना. ये VA को perpendicular आया. Correct. And then VB का direction is also known. तो VB का direction is like this. तो इसको 90 डिग्री. इसको 90 डिग्री मतलब कैसा आएगा? Am I correct? Now they will intersect at this point. Correct. Hello. Yes. This total angle is 90 degree. Okay, and this total is 90. तो अगर ये total 90 हो गया और ये इतना 20 दिया हुआ है तो ये कितना होगा? This will be 70 ना. And since this is 30 so this will be 60. Am I correct? And if this is 60 this is 70 so this will be hello 50. Correct. This is your point I. देखो ICR मिल गया आपको है ना. ICR मिल गया. This is point I. Means ये I point जो है ये point जो I है. Okay, I will be same for this instant. अगर ये चेंज किया तो I का पोजीशन चेंज हो जाएगा. समझ में आया ना. तो रॉड AB पे जितना भी पॉइंट आप लेंगे यहाँ पे रॉड AB पे कोई भी पॉइंट किधर भी यहाँ पे लो यहाँ पे लो यहाँ पे लो हर एक का सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी दिस I only. Are you getting me? That all point will rotate about this I only because all the points on this body AB will perform a general plane motions. That's why it will have a pure rotations about this I point, and this is an imaginary point. Correct? So now we know that if we have to find VB, what we can write this as omega into I into B. No? Similarly, if you have VA, we can write omega into IA. Velocity of point A is given by the angular velocity multiplied by the distance of that point from the center of rotation. So, but here we don't know IB and IA. VA is known to us, but omega भी नहीं पता है, so we cannot determine. Correct? So now what we can do here, see, we have got one triangle here. In triangle IAB, we can apply sine rule. Correct? Huh? We can apply what? Sine rule, since we know all the three angles. You know the sine rule, na? Hello? Hello? Yes, sir. This is 5 meter, correct? This is 5 meter. So we can write 5 upon sine 50 degree. I hope everyone know this. This will be
this will be IA upon sine 60 degree and IB upon sine 70 degree, correct? Now? By using this, I can find IA and I can find IB, correct? What is the value of IA? 6.133. IA is what? Sorry, 5.5, 5.65. 5.653. Okay. Give me the answer correct up to 3 decimal places. Okay. Then this is 6.133 meter. Correct, na? This is your IA and IB. Once you got this IB and IA, you can put here in this equation. Okay. This is, let's say, equation 1. This is equation 2. Okay. Now from 2, what we get? VA is known to us, that is 4, is equal to omega we can determine into this IA is known to us 5.653. So omega is nothing but, that is omega of AB, rod AB, which is nothing but how much? How much you are getting? 0.7. 0.708. Correct? सबको आया है? Everyone is getting the same? Yes. This is your second answer. पहला आंसर ये था, ठीक है? पहला आंसर ICR निकाला हमने, ठीक है? दूसरा हमारा आंसर क्या था? फर्स्ट हमने निकाल लिया, सेकंड भी हो गया. ओके, दिस इज आंसर 2. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन VB. तो VB कैसे आएगा? VB के लिए वी नो नाउ ओमेगा. ओमेगा इज 0.708. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इनटू दिस IB is 6.133. So how much is VB? Yes, 4.342. 4.342 meter per second. Correct. So this is your third partial answer. Correct. थर्ड में और एक पूछा है ना? थर्ड में और एक क्या पूछा है? Velocity of C. C. अभी वो कैसे आएगा? Yes. IC into omega. Now this will be C point. Let's say यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है? C point आया, ठीक है? At a distance of 2.5 meter, this will be 2.5 meter. Now you will join this I to C, correct? Right ना? ठीक है? Now tell me, next क्या करोगे? बोलो. Yes, I write here. Okay, let me write here. चलो IC निकालना पड़ेगा ना, लेकिन IC नहीं है अपने पास. हेलो, तो IC कैसे निकालेंगे? Yes, we have this triangle, correct? Sine rule. See, we have this triangle.
करेक्ट, ये ट्रायंगल है ना अपने पास। हेलो, नो दिस इज दिस एंगल, सी ये वाला एंगल, अभी ये जो एंगल है ये कितना है, ये कितना रहेगा? ट्वेंटी हाँ, 20 होगा। हाउ इट विल बी 20? 85 25 यस, ट्वेंटी कब रहेगा? जब वो आईसी जो है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहेगा ना 90 डिग्री। बट वो आईसी एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाएगा क्या रॉड एबी के साथ? आर यू श्योर विद दैट? 25. नो नो, फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूँ वो बताओ। आर यू श्योर अबाउट दैट इट इज 90 डिग्री, इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विथ रॉड एबी, नो, और विल इट मेक 90 डिग्री? नहीं ना। नहीं नहीं। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा अभी, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज करके। ये तो 70 हो गया, ठीक है। ये अभी ये पता नहीं है, क्योंकि ये इसका हमको जब ग्राफिकली आप ड्रॉ करके देखोगे ना तो ये 90 डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है। ये अभी हमको ये एंगल पता नहीं है, ठीक है। लेट्स से दिस इज थीटा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या बताया? और दिस इज सी, दिस इज आई, दिस इज ए, और ये कितना है? सर 2 पॉइंट। सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से हाफ हो जाएगा ना 25 डिग्री। हाँ निकालो ना, बोलो ना निकाल के कितना आता है। 25 लग रहा है। ये ट्रायंगल देख के क्या कुछ आइडिया आ रहा है क्या दिमाग में? कुछ निकल सकता है क्या कैसे? तो सी मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो फिगर को। और ये आई ए पता है अपने को, आई ए कितना है? 5.653 है, राइट ना? मतलब ये सर पता तो है, आई ए साइन पता है, ये भी पता है, साइन और एक एंगल भी पता है। तो वी कैन अप्लाई हियर द कोसाइन रूल ना, राइट और नॉट? अप्लाई कोसाइन रूल इन ट्रायंगल, वो इजी हो जाएगा ना, आई सी ए। तो अगर यहाँ पे देखो मैं आई सी ए निकालना है तो कोसाइन रूल कहता है आई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट ना, सी ए स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर, आई होप यू नो दैट, माइनस 2 टाइम्स सी ए आई ए एंड उसके बीच का एंगल दैट इज कॉस 70 डिग्री, ठीक है। तो सी ए अपने पास है, आई ए भी पता है, और ये एंगल भी पता है। नाउ टेल मी आई सी, आई सी आ जाएगा ना? हाउ मच इज आई सी? कितना आता है आई सी? हाउ मच इज आई सी? For 8.75.
हाँ बोलो, आंसर आया क्या? हेलो, 8.7. आईसी कितना आता है? 5.342 आना चाहिए। आ रहा है? दिस इज आईसी का वैल्यू। हाँ सर, 5.342। यस, तो वंस आईसी इज गॉट, अभी वीसी आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा इंटू आईसी, बिकॉज क्या रहेगा, ओमेगा तो सेम ही रहेगा ना, सी पॉइंट जो है वो ए बी पे ज़ाया हो रहा है, तो दिस विल बी सेम ओमेगा, तो वीसी विल बी 0.708 इंटू आईसी, दैट इज 5.342, एंड नाउ वीसी का वैल्यू आता है 3.782 मीटर पर सेकेंड। जस्ट चेक इट, करेक्ट? Yes. This is your answer. Now tell me the direction. Direction क्या रहेगा VC का? Along the rod, the ladder. Along the rod रहेगा या perpendicular to IC रहेगा? Which is the more accurate answer? Perpendicular to ice. Correct. तो हमेशा याद रखो, along the rod नहीं बोल सकते अपन जब तक ये exact 90 डिग्री ना हो, ठीक है? इसको, ये जो लाइन दिख रहा है ना IC, ये IC जो लाइन दिख रहा है, इसको perpendicular आएगा हमेशा, समझ में आया? तो दिस विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, मींस ये जो इंक्लूडेड एंगल होगा इन दोनों के बीच में, दिस विल बी 90 डिग्री एंड दिस इज बीसी। बट अगर ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होता था, अगर ये इसके साथ एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाता था इसके साथ, ठीक है, तो यही हो जाता था ना, ये वीसी का डायरेक्शन हो जाता था, फिर वो वीसी जो है along the rod हो जाता था। सिंस दिस इज नॉट मेकिंग एन एग्जैक्ट 90 डिग्री विद द रॉड एबी, दैट्स व्हाई ये वीसी थोड़ा सा क्या आएगा, अवे फ्रॉम द रॉड एबी आएगा। आर यू गेटिंग मी? हेलो हेलो, समझ में आया? हेलो, Yes, sir. okay, now let us take the next problem. Problem number 4.2.3. What is that? In the mechanism shown in figure, piston C is constrained to move in a vertical slot. Okay, so piston C is there, okay, and is constrained, okay, to move in a vertical slot. There is a vertical slot, उसी में वो ऐसा ऊपर नीचे होगा, समझ में आया ना? piston C. I hope you are getting me. A and B moves on a horizontal surface. A and B जो दिख रहा है आपको, moves on a horizontal surface. Rods CA and CB, rods CA and CB are connected with smooth hinges. Okay. If VA is 0.45 meter per second to the right, ये जो A है उसका velocity दिया हुआ है point A का, this is 0.45 meter per second to the right. Again it is mentioned to the right, correct? तो अभी tell me, VA का direction is known, correct? क्या VC का डायरेक्शन पता है क्या अपने को? हेलो 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 हेलो, VA का डायरेक्शन दिया है ना प्रॉब्लम के अंदर, दैट इज व्हाट, टू द राइट, ठीक है? तो VA का तो पता है, C का पता है? यस, सी का नहीं दिया। C का दिया नहीं है ना, तो C का पता है ना, लेकिन C तो उसमें ऊपर नीचे होगा ना, स्लाइड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो मेंशन करने का जरूरत नहीं है ना। टाइम हो गया ना, 3:30 तक। हेलो, आर यू गेटिंग मी? C will what? C will move up and down. तो C का भी पता है, C और A दोनों भी पता है, मींस वी कैन इजीली लोकेट द ICR, करेक्ट ना? ठीक है, मतलब ये रॉड AC के लिए हमको क्लियर हो गया कि हम ICR लोकेट कर सकते हैं, राइट? इतना क्लियर हुआ आपको?
हेलो, Yes, sir. Some. Yes, sir. डायरेक्शन पता चल गया ना वेलोसिटी का? मैंने बताया था ना, डायरेक्शन इज सफिशिएंट फॉर लोकेटिंग द ICR. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू? आप प्रॉब्लम में कैसे पढ़ के उसको आइडेंटिफाई करोगे कि कैसे ICR पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, and which link is performing general plane motion or not. See, this AC is performing GPM here, general plane motion, since it is giving rotation as well as translation at the same time. Okay. Now find the velocity of C and B. C और B का निकालना है. And also find the angular velocity of two rods. दोनों का rods का angular velocity भी निकालना है, वो भी नहीं दिया है. Can you try this? Can you try this? Yes, sir. Can you tell me what will be the direction for the point B? Point B का direction क्या होगा? Sir, वो horizontal. Yes. Horizontal. Towards what? Towards Left. left. Towards left, because it is moving. C का तो फिक्स है, ऊपर नीचे होगा, और A का राइट में होगा. तो फिर अगर A का राइट में है और C का ऊपर नीचे है, तो B का जो है लेफ्ट में है. ठीक है, तो ये हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल गया, मींस ICR हमको मिल जाएगा. अभी Sir. one thing if you observe here, so you will find that in this case you will get two ICRs. Am I correct or not? Hello. Yes, sir. दोनों rod का होगा ना. हाँ, दो रॉड है ना यहाँ पे, एक का इसका और एक का इसका, दोनों का आएगा, और एक ये रॉड का, क्योंकि दो रॉड दो जनरल प्लेन मोशन परफॉर्म करे ना, दो जनरल प्लेन मोशन आया, तो दो ICR आएंगे यहाँ पे, क्योंकि दो ICR लगेंगे दोनों का जनरल प्लेन मोशन दिखाने के लिए. ठीक है, तो यू हैव टू थिंक इन दिस वे. ओके, ठीक है, ट्राई करो. चलो. अच्छा, वन थिंग मोर, मैं एक चीज बताना यहाँ पे भूल गया आपको. ओमेगा जो आपने निकाला था यहाँ पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन आपने नहीं दिखाया ना, उसका डायरेक्शन भी दिखाना Sir, पड़ेगा. anti-clockwise. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा? Sir, anti-clockwise होगा ना. एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट. कैसे पता किया? Sir, velocity का AC के direction. डायरेक्शन. यस, VA will give the anti clockwise directions. तो उससे पता चला. ठीक है, दिस इज ओमेगा AB. ओके, ओके, फाइन. नाउ सॉल्व द 4.2.3. तो कुछ ऐसा दिया हुआ है प्रॉब्लम आपको. ठीक है,
ओके हेलो Yes. ऐसे दिए ना ठीक है हेलो Yes. now this is what this is moving like this is VC का direction okay and this is VA 0.45 meter per second and this is VB. So see here, just drop a perpendicular to this first, okay. Just a moment. Drop perpendicular like this, okay. And since this is moving like this, so drop perpendicular from here, okay. This is your first ICR. Again, similarly here, drop a perpendicular from this, and then correct, and then drop a perpendicular from this, okay. So this will be your second ICR. This is I1, this is I2. The number of ICRs will depend on the number of general plane motions. The rod AC will perform general plane motion about I1, rod BC will perform general plane motion about I2. Clear है? यस सर सर 45 से तो आप एक्सटेंड कर रहे हो नहीं एक्सटेंड आप बोलो जैसा आपको कन्वीनियंट सर बाद में कंटिन्यू करते ना आज पूरा दिन लेक्चर था हाँ जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट ओके यू कैन सॉल्व दिस चलेगा नेक्स्ट टाइम आप मेरे को आंसर बता दो ठीक है तो अभी इसमें क्या है देखो सब दिया हुआ है आपको आई थिंक I1A भी आपको यहाँ पे I1A निकल जाएगा ना आपका ठीक है और I1A इज गिवन आई थिंक ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है राइट ना ये वाला ये वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है ना यहाँ से ठीक है तो I1A इज आई थिंक डायरेक्टली गिवन टू यू I1A इज हाउ मच हेलो 300. 300. Yes, in meter you will convert it, so you will get 0.3 meter. And I1C is given to you, I think. I1C is how much? I1C is also given, that is 0.125 meter, correct, no? And then I2B is also given. I2B is how much? I2B is 0.2 meter, right, no? And I2C is 0.150 meter, correct? तो इतना सारा दिया हुआ है, okay? तो just rod AC पहले consider करो, okay? And you know that VA is what? I1A into omega, ठीक है? Omega of what? AC. Similarly, rod B, sorry, C के लिए point C के लिए क्या होगा? I1C into omega AC, correct? From here you will be able to calculate what? VC and omega AC, right now? VA is known to us. VA पता है, VA यूज करके आपको ये मिलेगा क्या? ओमेगा AC. And then omega AC यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, VC मिलेगा, I1C is known. Correct? Yes, sir. Then rod BC के लिए क्या करोगे? Again you will use VC is equal to I2C into omega BC. Okay ना? VC you know that, I2C know that, omega BC आ जाएगा, ठीक है?
and then you can use VB is equal to I2B into omega BC. Omega BC. Omega BC you know that, and I2B you know that, you can calculate VB, correct? तो ये आप solve कर दोगे ना? Yes, sir. Yes. Solve करो, next time देखते फिर आंसर निकालो, ठीक है? सर हाँ बोलो. ये पीपीटी या फिर नोट्स अपलोड कर दो ना, मतलब हाँ आपको ये शेयर हो जाएगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा, बट आपको सर एक रिकॉर्डिंग ही स्लाइड शेयर किया है अभी तक। नहीं, वो बाकी के लिए मैंने बोला ना, आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस उसमें है, आपको सॉल्यूशंस के लिए रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है? उस स्लाइड में लिखा हुआ है कौन सा रिकॉर्डिंग नंबर, वो भी लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर. हेलो, तो shall I end Yes, now? sir. किसी को कुछ पूछना है? हेलो, एनी डाउट? No, sir. नो सर। No, sir. तो आगे का अभी हम बाकी का आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. इसका आंसर निकाल के आओ नेक्स्ट टाइम. ओके Just give me 1 minute. I will take your attendance, then you can leave. Okay, now you may leave the meeting. Thank you. थैंक यू। Hello.